urban cooperative banking and financial inclusion through modern technologies like CBS, core banking service, data center, and payment solutions. We have 4 people here joining for this session. I will start with inviting Honorable Session Chair of this particular session. I invite Mr. Pushpinder Singh, who is Head of Financial Inclusion. नमस्कार and a warm welcome to all of you. यहाँ पर आके अच्छा लगता है क्योंकि ये एक ऐसी गोष्ठी की जा रही है जो पहले भी गांधीनगर में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, और यहाँ पर आज के चैलेंजेस को लेते हुए जो ये मानते थे कि अभी तक वो पिछड़ा वर्ग है, कोऑपरेटिव सेक्टर वो अपने आप को पिछड़ा वर्ग मानता था, लोगों की निगाह में भी शायद ऐसा ही था, लेकिन वो बहुत अंतर पड़ गया है उसमें। आज जो अभी एक पिछले पैनल में डिस्कशन हुआ है कि ये एक उनको लास्ट मूवर एडवांटेज मिला है कि सबसे पीछे रह गए, लेकिन अब सबसे लेटेस्ट टेक्निक जो है उससे वो आगे बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि वो काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। आज जितनी रफ्तार से, जितनी तेज़ी से कोऑपरेटिव बैंक आगे अपने आप को टेक्नोलॉजी में लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बाकी बैंक जो अभी हैं, बड़े बैंक हैं, उन्हें भी अचरज में हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रशांत जी से कि अगर आप अपना प्रेजेंटेशन देना चाहें। Good afternoon, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank IBM because the IBM guys were supposed to be here, and then they had some urgent call to attend, and we got an opportunity. We at Robosoft, we are the premium partners of IBM, and we got an opportunity to actually present in front of such an elite gathering. So. Without further ado, I'll just delve right into the presentation itself. The first thing that comes to my mind is, I was reading some reports, Silent and Gartner, all the major financial, advisories across the world. And what actually came as a surprise to me was, which continent actually leads in the usage of technology for banking and financial sectors? Perhaps you might also be surprised, it's Africa. So the African countries are, although India is one of the fastest growing economies, and we are leading the world by example in terms of technology and other things, but we are not using our own technology actually these days. So, as per the reports, 75% of world's banking transactions happen in African continent. Excuse me. So, why is that? So, the question simply arises, cooperative banks were established in India so as to take banking and financial industry to the masses. It's not just the elite of the society who should actually use these services. It should be the masses. It should be the rural India who should be actually using all these services. We should be touching each and every lives. That was the message that was given when we started cooperative banking in India. So what do we lack? Mobile services, if you see mobile services, they have been in India for about 15 years. And they have penetrated almost every household in India. Even a rickshawala or a sabji wala these days has mobile and is actually using some sort of banking services as well, with the current government schemes coming into picture, wherein government has started asking people to open their bank accounts, to legalize everything, to actually regulate and bring banking and financial inclusion to each and every life. So what actually is required?
So the general notion amongst banks is that if you start using technology, it's a lot of capital expenditure, lot of investments to be made. Not everybody, not every bank, especially smaller banks, do not have such kind of investments, such kind of money to invest, which is actually not true. That is what we are actually presenting in this presentation today. Banking, when we talk about mobile banking specifically, wherein people start doing their banking transactions through mobile, we are not just talking about specific transaction. We are talking about each and every transaction that can be done through a normal bank channel. Wherein a smaller bank we are trying to grow is actually opening branches, going to places, opening at in the newer states where you have got licenses, opening in newer areas where you do not have branches, actually investing in staff and infrastructure. But mobile, we forget about technology, we forget about mobile, which everyone uses, which is your new branch. You can take your banking services via this method to each and every person that you want to actually tap on. So it's not just a specific set of transactions that can be done through mobile banking. It is the whole banking itself that can be taken on mobile and actually be transferred to your consumer and give the power to your consumer, and you can actually go ahead and touch your customer's life way beyond the conventional thinking that is there. So you can actually have your retail banking, you can have SME banking, you can have corporate banking, and in fact, not only just the B2C or the business to customer kind of relationships, you can have your internal transactions happening inside the banks to be much faster, much efficient, and much trustworthy and secure. So, you can actually see and read through these slides that, the transactions or the things that can be done in various sectors of banking or various LOBs of banking can be done via these mobile applications that companies like us develop these days. So how do we make this transformation? How do we actually, so let's talk about a bank, a decent scale bank. Generally, every bank has a website these days. You obviously provide certain things, certain facilities to your customer, wherein your customer can go online and check for his account balances, do a few payment transactions, do a few things. But he needs to have a desktop in place to actually do those things. So the thing is that how do we transform this conventional style of online banking to a mobile banking platform? So the first thing that comes to our mind is, you take your current applications which are actually installed up and running for desktop websites to make them mobile friendly. You make them as if they are made for mobile and they can run very well on mobile. So, and it's not very cost consuming. It's very simple because it just needs to be re-engineered and done with a different style set, rather than actually re-engineering the whole process. The process remains same, your infrastructure remains same, your everything remains same. You just port your existing online desktop banking to mobile banking. And then, as you go forward, you can actually use not everybody uses smartphones, so you can actually use the USSD services. That is your, if we talk in simple terms, it's called SMS-based services. So you send some SMSs, and based on the person's response, on the communication style of SMSs, where based on the person's response, you can do the transactions for them. You can auto-generate the transactions and do them. And similarly, of course, with the smartphones becoming cheaper and cheaper by the day, you can always use the mobile apps. So this is the kind of roadmap that we like to present today, wherein you can how actually you can come on board, how you can actually start using technology,
in a phased manner, wherein you start with some certain things, you do certain things by end of certain time, and by end of certain time you start actually competing with the bigger banks, bigger nationalized banks, bigger private banks, wherein to provide your customers the kind of services they provide. So, let's talk about what is the difference between a mobile app and a desktop app. So generally, if you ask a layman, what he will say is that a mobile app gives me a very nice interface, a very jazzy-looking interface, and I can do things without typing a lot of things. So let me tell you, mobile applications are not just about user interfaces. Mobile applications are actually enterprise applications which actually touch your banking services at a very deep a basis, not just the front end that your customer sees. So the mobile applications that are being developed these days are not just actually front end. It's also about security. It's also about your operations, how you do things, how the transactions are being managed, and the security of those transactions. And actually, you can actually engage the customer because you are actually in his the banking is in his hands. You can actually engage the customer to actually do certain things which you want him to do. Like a customer who is actually a savings bank customer can become your a loan customer because you advertise certain loan products of yours to them and at a competitive rate, and he can become because the knowledge is in his hands. He knows the information he receives is what he gets out of these mobile apps. So front end is a very, something which can be done in a very short span of time, where speed to market is there. You can have lots of interfaces, things, there's a lot of technical things involved. I'm not going to talk about anything technical out here. It's just that, so whatever you have as a backend for your online application or a desktop application, the same thing can be used with a different front end, as I said, porting your existing desktop application to mobile. The same thing can be used. Similarly, for your back-end services, if we start using the state-of-art services that are actually available these days, you can have a lot of security. You can have checks and bounce. You can actually reduce your operating costs because there will be less number of staff, less number of resources required to actually do those things because the customer himself is helping himself. So just to give you an example, with our partnership with IBM, we developed a mobile banking app for ICICI Bank, which which is a wallet kind thing, wherein ICICI Bank puts the money in a e-wallet for their customers, and customers can use these wallets to actually do their shoppings, give their pocket money to their kids, or give some urgent needed cash to their parents for anything that is required. So just an example. So and he doesn't need to travel to a nearest branch or nearest ATM to do such kind of transactions. So apart from that, just a few things about RoboSoft Technologies. I'll not go into the history and other stuff of RoboSoft Technologies. So we have been doing, so with RoboSoft Technologies, we have actually worked with the banks. So generally what happens, if you go to a bank and talk to a bank officer, they may not be very technology savvy. They may not have that intricate knowledge of technology, but they have their problem statement. I want to do this. At RoboSoft, when we go to those customers, we actually tell them, you may want to do this, but then you may want to do X, Y, Z as well. So we provide them app strategies, we provide them consultancies, we design their things,
and we are there to help. So we do it all end to end for our customers. So we not only define your problem, we actually help you with your problems. We actually tell you what is happening inside the market and how you are, based vis-a-vis your competitors are. And then, based on your, spending decisions, we help you achieve your targets, as and when required. Just a few things, what is happening in the market these days, and RoboSoft has been instrumental in doing. So we have developed certain apps which are actually, for ICICI Bank, we developed iWatch, wherein, the banking has been transformed to taken to a person's watch, not now even not on his palm, but also on his wrist as well. So you can just have a look as if he's looking at a time and actually look at his bank balance or what is it right now. So kiosk banking, tab banking, so ITI, UTI, Yes Bank, ICICI, HDFC, everybody is doing it, so can you. So that's all from my side. Thank you very much. Thank you, Prashant. I think this is something which seems a bit far-fetched for a lot of people. Though the technology is there, it is there globally now. But it feels as if, it is still for the young generation. But that is where the cooperative banks is also heading for. The members are there. The members' profile is changing from those die-hard customers to young generation who feels that unless my bank provides me this service, I have other options. So that trying to bring in new customers and retain those customers is again going to be a challenge even for the cooperative banks. While Prashant, you have talked about solutioning availability on mobile banking, and then going beyond the mobile banking to any form factor. Basically what you're shifting is from mobile even down to a device which is primarily connected with the mobile through a Bluetooth, if I'm not wrong, on the wrist, on the watch that you mentioned. So it is just form factor is shrinking, the size is shrinking, the UI is becoming more complicated. So we also have Gaurav here, who's again will be talking about, I think he has got a presentation. Let us hear him out. No presentation? Oh, I was told that there was some presentation. थैंक यू पुष्पिंदर. मैं बैठ के बोलने की चेष्टा करूंगा, इसे मेरी उदंडता मत समझिए. आई हैव हर्ट माय बैक, और प्रेजेंटेशन में मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैं चाहूंगा कि आपके साथ एक वार्तालाप हो, रादर देन आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स देखते रहें. मैं आपको प्रेजेंटेशन बाद में भेज दूंगा. तो चर्चा चालू करते हैं. प्रशांत ने बात की इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी जो सहकारी बैंक यूज कर सकते हैं. तो हम मनी ऑन मोबाइल इज अ 5-year old PPI, RBI ने पेमेंट एंड सिस्टम एक्ट के अंडर ये नई कैटेगरी क्रिएट की थी. तो हम 5 साल से PPI के कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं. और उसमें हमने क्या किया है कि हमने एक पूरा पेमेंट का एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, उसमें पार्टनरशिप्स क्रिएट किए हैं. तो इस समय हमारे पास कम से कम कोई 2,65,70,000 के करीब रिटेलर्स हैं ऑल इंडिया. 2,65,000, मतलब जो कि पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेस जितनी हैं उसके लगभग या है या उससे भी ज्यादा हैं. और ये जो रिटेलर्स हैं, ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉमर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो काफी सारी सुविधाएं आपके कस्टमर्स को दे सकते हैं. और मेरा ये एक आपसे निवेदन है कि आप अपनी ब्रांचेस को भी मनी ऑन मोबाइल की एक शाखा बना सकते हैं. हमने काफी लोगों को अपने बूथ पे समझाया भी कि भाई अभी क्या हो रहा है कि कस्टमर आपके पास थोड़ा पैसा डिपॉजिट में रखता है, बट फिर एटीएम से या टेलर के पास जाके कैश विड्रॉ करता है और फिर उस कैश से ट्रांजैक्ट करता है. तो जो बैंकिंग के स्टैटिस्टिक्स है कि भाई जो ब्रांच ट्रांजैक्शन है वो 50 रुपए की होती है, एटीएम 18 रुपए की होती है, और अगर सेल्फ सर्विस हो मोबाइल या पीओएस पे वो फ्री या इनकम भी आ सकती है उससे इंटरचेंज के जरिए.
तो हम आपको ये एक सुविधा दे सकते हैं जिससे कस्टमर आपके जो डिपॉजिट में जो डिपॉजिट्स रखे हैं उसी के ऊपर अपना व्यवसाय कर सके, कॉमर्स कर सके, बिल पेमेंट कर सके, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सके। कई बैंकों के पास, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास अभी आईएमपीएस की सुविधा नहीं है। तो ये आईएमपीएस जो कि एक इंस्टेंट डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस एनपीसीआई ने बहुत बढ़िया सर्विस की है, पूरे विश्व में उल्लेखनीय है कि ऐसी सर्विस है ही नहीं कि 3 सेकंड के अंदर बेनिफिशियरी बैंक से कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका पैसा क्रेडिट हो गया है। ये सर्विस हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं बिना एक टेक्नोलॉजी में निवेश किए हुए, कैपेक्स किए हुए, पूरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मॉडल पे पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे। जिनके पास भी ये सुविधा नहीं है और वो एक इंटरनली ये सोच रहे हैं कि ये सुविधा कस्टमर्स मांग रहे हैं, क्योंकि काफी बैंक्स, काफी सहकारी बैंक्स, काफी नॉन बैंक्स ये सर्विस ऑफर करते हैं, तो प्लीज हम हमारे से आप कांटेक्ट करिएगा and we'll be very interested to offer this service to you on a shared infrastructure basis. तो जब हमारा क्या हो रहा है कि हम आपके जो ब्रांच में एक टेलर को अपना प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो एक मोबाइल फोन के जरिए हो सकता है, पीसी के जरिए हो सकता है, और फिर उससे वो आपके कोर बैंकिंग से डेबिट करके हमारी सब सुविधाएं अपने कस्टमर को ब्रांच में ही उपलब्ध की जा सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए एक नई इनकम स्ट्रीम आ जाएगी। आज की तारीख में जहां बैंक्स को प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, सहकारी बैंक्स बोल रहे हैं कि बॉस डिपॉजिट्स बहुत छोटे छोटे हैं, उससे प्रवरता नहीं है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाएगी उसी डिपॉजिट पे। तो अभी जो नई कैटेगरी आई है, आपने सबने देखा होगा कि भाई पिछले महीने आरबीआई ने 11 पेमेंट बैंक अनाउंस किए हैं। तो वो पेमेंट बैंक तो प्योर टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनके पास अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये सब टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन और मोबाइल वॉच सहकारी बैंक के लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रही है, बट वो सब पेमेंट बैंक जो आपके कस्टमर का 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लेने वाले, वो तो उन्हीं टेक्नोलॉजी के जरिए वो डिपॉजिट लेंगे कि भाई आप डिपॉजिट हमारे पास रखिए और ओमनी चैनल से उसको एक्सेस कीजिए, अपनी वॉच से, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, और कैसे भी। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा डिफेंस और अटैक दोनों खेलने का, जैसे हॉकी होती है उसमें आपको बैक में डिफेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए कि गोली के पास गोल ना हो जाए, और फॉरवर्ड भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि दूसरे मतलब जो ओपोनेंट है उसका गोल हो जाए। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जब 11 लोग आके आपके ही पड़ोस में अपना पेमेंट बैंक की शाखा खोलेंगे, आपके ही कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए, आईबीएम हमारे साथ, रोबोसॉफ्ट, ई पैसा, इतने सारे पार्टनर्स हैं टेक्नोलॉजी, उनके साथ मिलके सम्मिलित होकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफरिंग अपने कस्टमर को दीजिए ताकि उसको दूसरी जगह सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आपके साथ तो उसका काफी मतलब जनरेशंस का नाता है, वो इसीलिए दूसरी तरफ देखता है, पेटीएम में पैसा डालता है बिकॉज आपके पास वो वॉलेट नहीं है। आप हमारे साथ अपना वो व्हाइट लेबल्ड वॉलेट बना लीजिए, तो कस्टमर को जरूरत ही नहीं है कि आपसे दूर कहीं देखने की कि वो दूसरे की सर्विसेज ले। मैं आपको यही मतलब अनुरोध करता हूं कि आप टेक्नोलॉजी को अपना साथी मानिए, टेक्नोलॉजी से डरिए मत। टेक्नोलॉजी हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होती, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे कि इसको ओपेक्स में कन्वर्ट किया जाए कि आप तभी पेमेंट कीजिए जब आपकी वो टेक्नोलॉजी यूज हो, ताकि आपकी जो इनकम स्ट्रीम से ही आप उसकी एक्सपेंसेस भी इनकर कर सके। बस मैं अब यहीं पे आपसे आई विल से थैंक यू टू यू एंड आई विल एनकरेज, आप हमारे बूथ पे आइए, मेरे काफी सारे कोलीग्स भी हैं वहां पे, आपको वो पूरी जानकारी देंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, और आप सब मनी ऑन मोबाइल के साथ जुड़िए। और धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू गौरव, आपने काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छा शेयर किया। हमारे यहाँ जो श्रोता लोग हैं वहाँ बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, और ये जानकारी उनको आपने दी कि आने वाले समय में हर चीज़ आपको खरीद के अपने पास रखने की टेक्नोलॉजी आवश्यकता नहीं है। आप ओपेक्स मॉडल में काम कर सकते हैं, कैपेक्स की जगह पर ओपेक्स पे चलिए, शायद उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से जो एक जिज्ञासा है कि साहब मोबाइल बैंकिंग तो मेरे पास अप्रूवल नहीं है। अधिकतर जो है यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कुछ को छोड़ के, जिनके पास अप्रूवल नहीं है मोबाइल बैंकिंग आउटवर्ड प्रोसेस करने के लिए। तो उनके लिए सिर्फ एक थोड़ी सी जानकारी, कईयों को तो जिनको मैं पहले मिल चुका हूँ, उनसे बात हुई है, उनको ये बताया भी गया है कि रिजर्व बैंक ने कुछ रिलैक्सेशंस किए हैं, ये जानते हुए कि आईएमपीएस का मतलब केवल मोबाइल बैंकिंग नहीं है। शुरुआत वहाँ से जरूर हुई थी कि आईएमपीएस को
इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम कहा गया था, अब वो सिर्फ इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पे रह गया है। मोबाइल का शब्द वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि ये देखा गया कि लोगों ने, बैंकों ने अपने आप उसमें परिवर्तन लाया, उसमें एक नई सोच लगाई कि जब हम आरटीजीएस और एनईएफटी एक ब्रांच से कर सकते हैं, कस्टमर आता है वहाँ से हम कर सकते हैं, तो आईएमपीएस क्यों नहीं। तो रिजर्व बैंक ने यह परमिट कर दिया है बैंकों को कि यदि आप आईएमपीएस की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं अपनी शाखा से, अपने काउंटर से, तो उसके लिए रिजर्व बैंक से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं। आप आज भी कर सकते हैं। आउटवर्ड आपका कस्टमर भेज सकता है दूसरे बैंक की तरफ आईएमपीएस। दूसरी चीज़ जो उन्होंने अलाउ की कि जब तक आप ये कर रहे हैं, चाहते हैं कि पहले आप सिर्फ बेनिफिशियरी, कि आपके कस्टमर को मिल सके पैसा आईएमपीएस के द्वारा, हो सकता है दूसरे बैंक में किसी और को, उसका रिश्तेदार का या किसी क्लाइंट का खाता है जो कि आईएमपीएस से भेज सकता है, तो उसे रिसीव करने के लिए किसी बैंक को अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अलाउ की है कि यदि वो एटीएम पर यह प्रावधान करें, वो सॉल्यूशन दे कि एटीएम से कोई बैंक अलाउ करे कि वो आईएमपीएस आउटवर्ड करना चाहे, उसके लिए भी रिजर्व बैंक के परमिशन की या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए इसको लागू कर सकते हैं। और जो कोऑपरेटिव बैंक इंटरनेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन बैंकिंग की सुविधा देता है अप्रूवल्स के साथ, वहाँ से भी वो आईएमपीएस आउटवर्ड की सुविधा दे सकता है। तो ये आपके लिए है। केवल जब आपका फॉर्म फैक्टर जिसे कहते हैं कि मोबाइल पर परिवर्तित होता है, उस समय आपको भारतीय रिजर्व बैंक से पहले उसके लिए अप्रूवल लेनी हो। अब जब ये अप्रूवल की बात आती है तो कई पूछते हैं कि साहब इसकी आवश्यकता क्या है, आज हर कोई चाहता है, हर कोई करना चाहता है। तो यहाँ मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी होगी या चर्चा करनी होगी यहाँ पैनलिस्ट से भी, कि मोबाइल ईजी टू यूज़ है, हर एक को अच्छा लगता है, हर कोई आज नया मोबाइल लेना चाहता है, यंगस्टर एकदम लेटेस्ट लेता है, लेकिन क्या वे उसकी सिक्योरिटी के बारे में जानता है। बात करने के लिए बहुत अच्छा है, ऐप्स डाउनलोड करने के लिए बहुत अच्छा है, हर तरह की चीज़ों में अच्छा है, लेकिन क्या वो उतना सिक्योर है कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी उतनी ही सिक्योर रहें कि उसमें कोई फ्रॉड ना हो सके, कस्टमर का पैसा ना चला जाए, उसकी अनजान, बिकॉज वो जानता नहीं था, उसने कुछ लगा दिया और वो ना हो जाए। शायद इसके लिए आई माइट हैव टू रिक्वेस्ट मिस्टर नंद कुमार फ्रॉम आईडीआरबीटी, if you can say a few words about how mobile you can work and how the financial inclusion can be achieved through mobile banking or otherwise. Okay, good afternoon everybody. So I'm from, so you heard two speakers in the morning, one is Dr. Rama Shastri in the morning and then just now is Raguraj, they are from IDRBT. So IDRBT has, it does a few IT services. For example, it runs the Infinet, which is the countrywide network of banks. IDRBT also runs SFMS, which handles RTGS and NEFT. They are also looking at cloud. I think somebody mentioned community cloud, private cloud, and public cloud, and then community cloud. So these services are being, so I come from a company called IFTA. So IDRBT and NABARD together, they're forming a company called IFTAS, Indian Financial Technology and Allied Services. So these services plus whatever banks want to do, so this is mainly focused at banks, whatever level, public sector, private sector. So basically there are a lot of entry barriers for small banks, right? When it comes to channels like you were saying, mobiles. So mobile is the way to go for the future. So if the small bank or corporate bank is not on mobile for whatever reasons, RBI or whatever technology or funding, capital reasons, that's a negative thing. So you have to get on the mobile. And so just to pull in all the thoughts, somebody talked about sharing of resources, right? Sharing of resources when it comes to even CBS, right? So we are doing a pilot with an UCB in Idukki, where the CBS will run on the cloud from Hyderabad, right? So along with this core banking, we will also have the channels. Anyway, we run RTGS, NEFT. We will also have the mobile platform. And we are thinking of other things also. For example, you may want to do, some kind of CRM and then draw, inferences from it. So one is sharing thing and also aggregating.
the main benefit of sharing comes from aggregating a lot of people together. Like somebody talked about training of people spread across places. If you aggregate, so one is train the trainer and all that. If you aggregate across banks, the needs, maybe your purchasing power is higher. So these are the things we are looking at, and so mobile channels, right? Internet banking anyway is like a little bit old. Wallet anyway, NPCI I think will be looking at it. From a B2B perspective, we'll be looking at corporate. I think he also mentioned trade finance on the mobile, things like that. We'll be looking at. So that's the part on mobile, right? Thank you for sharing those thoughts that IDRBT is providing cloud services. But are you also looking at providing solutioning for mobile banking hosted services to the cooperative sector? Because I think this is where most of the cooperative banks have already moved to the CBS shared model, their hosted model. Some are having on-premise, others even on a hosted model. I think NABARD had also pitched in by offering the RFP through C-Edge and also through Wipro. So is IDRBT also planning to do the same, going the same way? Yeah, so the center of our universe is CBS, and around that we have channels, and around that we have surround systems, and around that we have corporate services, right? Like, for example, payroll, HR. So we propose to provide all the four, sub-verticals of applications or systems for the banks. We are doing pilots here and there. We are talking to 2 banks in Maharashtra also, UCBs in Maharashtra. So once these pilots are through, maybe by December, we plan to offer the entire suite of applications, including mobile and all the other things. One more question to Prashant. We talked about mobile, how you have shown that mobile banking works for the cooperative, not the cooperative, but actually it's the private sector banks. ICICI, you mentioned HDFCs and the whole lot. But here are my friends from cooperative sector. They are interior in the country. Just in the previous session, we were talking about the connectivity issues. I think one of the cooperative sector banks had already mentioned they have severe connectivity problems even for the branches. Now, what about the mobile? Is it the same that if I can talk on a mobile, I can transact on a mobile, or is it different? So transacting on a mobile is slightly different, yes, but then there are lots of things. It's not just the, as I said, it's not just the smart mobiles, smartphones, which you can use for mobile banking. Actually, you can use, not everybody has smartphones. If you talk about rural India, they might not have smartphones, but they have phones which can send SMSs. So, 2 things. One, if you are actually giving them the services where they can actually send you an SMS or actually respond, communicate to you with the SMS, the charges are very less, number one. Number 2, you are generating transactions for them based on the responses that the customer is giving you while he is selecting actually through the communicative or the SMS. So because you are generating the transaction, it's on the server side. You are doing at your end, so it's highly secure. It's just what is coming from the customer is over the net. Third thing, with the launch of 4G services, so we can safely assume that at least for Maharashtra, where it's not a backward state, we have a fairly good connectivity here, not only in the urban sections, urban geographical areas, but also the rural areas. So, my studies and our studies show that you get a decent connectivity to run a decent, not a very heavy, but a very nascent, a very decent mobile app on a smartphone in a rural area as well. So, so there are lots of permutations, combinations available for you to choose from. Depends on how you want to, actually place yourself, position yourself in the market in front of your customers, how you want to go forward.
You can start with USSD or the SMS-based services. You can move on to gradually smartphone-based services. You can have highly secure services at a future, in the future. Of course, as you said, there are lots of cloud options available. You need not purchase or have your own infrastructure set up. You can always, hire it. So lots of companies are available. We also do it. So there are lots of things, there are lots of combinations available which we can, work out. कनेक्टिविटी के बारे में दो अलग राय यहाँ बन रही हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी ब्रांच जो है बारिश की वजह से डिस्कनेक्टेड है 8 दिन, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र क्षेत्र में, स्टेट में ही, राज्य में ही कनेक्टिविटी शायद मोबाइल में इतनी ख़राब नहीं जितनी कि बाकी कनेक्टिविटी की बात हो रही। शायद प्रशांत जी यही कहना चाह रहे थे कि मोबाइल की कनेक्टिविटी शायद बेहतर है। तो क्या टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव, हालांकि ये डिस्कशन पॉइंट नहीं था इस पैनल का, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी में आप देखना चाहेंगे कि ऑल्टरनेट, कि आपकी वीसेट नहीं चलता तो क्या और दूसरी चीज़, क्या 3G या 4G पर आप कोशिश कर सकते हैं आपकी ब्रांच शाखाओं को चलाने की? सिक्योर VPN बना के, टेक्नोलॉजी का अलग ये मुद्दा है, इसकी तरफ अलग तरह से जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है और ये कॉर्पोरेट सेक्टर की बात है जो कि सबसे लास्ट माइल है, और उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं पैक्स हैं, जिनके बारे में पहले यहाँ चर्चा हुई इसके पिछले सेशन में, तो पैक्स को भी अगर कंप्यूटराइज करना है और उनको भी अगर टेक्नोलॉजी में लाना है तो वो आवश्यक है कि उनकी कनेक्टिविटी भी उसी प्रकार से आए, तभी ये फ़ायदा हो पाएगा और तभी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मेरे ख्याल से सही मायने में हर नागरिक के पास पहुंच पाएगा जिसकी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो गौरव, यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, मतलब ये बहुत ही टॉपिकल इशू है, कनेक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन और जोग्राफिक रीच। तो मैं दो एग्जांपल देता हूँ। अभी आज सुबह मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए ऊबर बुक किया मैंने। बहुत ही मतलब प्रवलित है यहाँ बॉम्बे में खासकर, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलता, ड्राइवर नहीं मिलते और वो सब, और ऊपर से मेरी बैक ठीक नहीं है, तो मैं ऊबर पे ही निर्भर करता हूँ। तो ऊबर ने एयरटेल 4G के संग एक नई ऊबर कैटेगरी निकाली है, ऊबर वाईफाई। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ऊबर वाईफाई आज ऊबर लेके आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ऊबर में वाईफाई है तो मैं ऊबर का वाईफाई यूज करता हूँ। हाईवे पे, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे गोरेगांव से बांद्रा तक आते आते मेरे 3-4 बार फोन कॉल आए जो कॉल ड्रॉप हो गए, बट वो वाईफाई चलता रहा। मतलब मेरा जो भी ईमेल वगैरह चल रहा था वो दुरुस्त था। तो ये बोलना कि अगर फोन पे बात हो रही है इसका मतलब डेटा भी चल रहा है, और डेटा चल रहा है तो फोन पे बात हो सकती है, ये मतलब इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, ऑपरेटर कैसे उसको प्रोविजन करता है। अगर उसने कोई 4G की सर्विस, जैसे आजकल टीवी में ऐड आती रहती है एयरटेल 4G, अगर आपका स्लो चल रहा है तो लाइफ लॉन्ग मोबाइल फोन फ्री, तो इसका मतलब अगर इतना बड़ा वो आपके सामने एक क्लेम ले रहे हैं तो इसमें उन्होंने काफी उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी इंफ्रा में, जो कि सामने दिखा मुझे कि मेरा जैसे सेल टावर टू सेल टावर वॉइस कॉल ड्रॉप होता गया, बट 4G चलता रहा। अब मैं तो उतना टेक्नोलॉजी समझता नहीं हूँ, ऐसे प्रोविजन है कि उतना अनरिलायबल नहीं है जितना कि वॉइस कॉल ड्रॉप है। तो अगर हम अभी यहाँ पे जो है जो हाईग्रीवा सॉफ्टवेयर ने वो दिखाया, ये जो अपना क्या जो CCTV वाला, वो अभी डेमो लाइव दिखा रहे हैं, वो भी एक टाटा डोकोमो का एक 4G डिवाइस है, छोटा सा डोंगल है, उसके ऊपर उनका पूरा इंटरनेट चल रहा है। उनका कोई VPN नहीं, कोई लीज लाइन नहीं, कोई MPLS लिंक नहीं, अच्छी खासी जिटर फ्री उनकी वीडियो स्क्रीनिंग चल रही है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि भाई टेक्नोलॉजी पे निर्भरता इतनी ना हो और रिडंडेंसी ऐसे 4G नेटवर्क्स पे बनाई जाए और टेलीकॉम ऑपरेटर से क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर लेके वो प्रोविजन की जाए, तो मैं ये समझूंगा कि मोबाइल ऐप और ब्रांचेस और रिमोट लोकेशन में चलेंगी। क्योंकि हमारे जो 3 लाख रिटेलर्स हैं उसमें कम से कम 20-25 हजार नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड, मणिपुर, वो तो पिछड़े हुए राज्य हैं, मतलब बॉम्बे के, महाराष्ट्र के कंपैरिजन में, बट वहां भी हमारा रिटेलर मनी और मोबाइल ट्रांजैक्शंस कर पा रहा है। उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही कि वो बोल रहा है कि बारिश आ गई। चेरापूंजी में तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा बारिश आती है, फिर तो चलना ही नहीं चाहिए था, उसका सिस्टम चल रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आपने कहा सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी मोबाइल फोन में इनहेरेंट कोई ज्यादा स्पेशल रिस्क नहीं है। ये है कि ये मोबाइल डिवाइस है, किसी और के हाथ लग गया तो वो भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। पहले तो ये है कि भाई एप्स पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। ऐप से पहले आपका फोन का जो लॉक इन स्क्रीन है वो कोई बायोमेट्रिक से है, कोई एप्पल का थंब से है, सैमसंग का कुछ काटे पीटे करने से खुलता है।
तो उस पर आपका पासवर्ड लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ओपन है। तीसरी चीज है कि मनी ऑन मोबाइल ने ऐसी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है जो भारतीय नौसेना यूज कर रही है अपने सबमरीन्स के साथ, जब वो कम्युनिकेट करती हैं सबमरीन्स एट सी, या दूसरी कंट्री के साथ जब वो अपनी जॉइंट एक्सरसाइज करती है, उनके साथ कोलैबोरेशन करने में जो वो एनक्रिप्शन और वो टेक्नोलॉजी यूज करती है, हम उस पर निर्भर हैं और वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि ट्रांजैक्शन कहीं बीच में ट्रेसपास ना हो, मैन इन द मिडिल अटैक ना हो। बट जो कार्ड जो फेस टू फेस में जो सुरक्षा देता है कि कार्ड है, चिप कार्ड है, टर्मिनल में डाला, पिन एंटर की, वो तो इंटरनेट पे हो ही नहीं सकती, चाहे इंटरनेट हो मोबाइल पे, चाहे इंटरनेट हो लैपटॉप पे, चाहे वो टैबलेट पे। उसके लिए 2 फैक्टर है, उसके ऊपर डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग है, वो सब करते हैं। बट उसके बाद अगर आपके कस्टमर को आपने एजुकेट नहीं किया, कोई कॉल करता है, मैं कपोल सहकारी बैंक से बोल रहा हूँ, अपना पिन विन सब कुछ सीवीवी दे दो, और वो कोई भला मानस दे दे, तो उसमें मोबाइल की क्या गलती है? तो ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज हमेशा डिवाइस पे नहीं होता, उससे पहले ही हो गया होता और डिवाइस बदनाम हो जाता है। धन्यवाद। Thank you, Gaurav. One last question to Nankumar ji. You are offering services, hosted services to the banks, which you are planning to, also pilots are going on. Is it that you give full package deal, you take CBS and all surround systems, or you also give them services on a specific request? Say, suppose somebody wants to, he already has a CBS somewhere, he is not happy with, or that particular vendor doesn't have a solution for mobile banking or for something else. Would you be able to connect with their CBS through your services? Okay, so these the 4 layers that I said, you can take, you can utilize services of whichever layer you want in bits and pieces. That's possible. What we have not tried so far is connecting our. So, for example, banks take e-learning services from us, which is like non-critical. They take email services from us, right, which is not very critical, but it has to be. So, if it's down, it makes an impact. But what we have not tried is having a surround system or channel running in IDRBT in Hyderabad, connecting to another core banking system outside. That we have not tried. But we are willing to, like, this POC itself is like you were talking about connectivity and all that. There's a lot of issues, right, to make the whole chain work. So we will try that also and prove it and make that also available. It's not an issue. Thank you. I hope this discussion was of some importance to you. We can now take questions from the public, if any. आप लोगों से कोई सवाल आप लोग पूछना चाहें इस पैनल को? Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Let's be here for 2 minutes. No, it's fine. So it was a discussion on urban cooperative banking and financial inclusion through modern technologies like CBS, data center and payment solutions, and very nicely moderated by Shri Pushpinder Singh, who is himself heading financial inclusion and new business in National Payments Corporation of India. As we all know, NPCI is taking care of payment and remittances in the country. So I request Session Chair Pushpinder Singh ji to kindly present mementos to our eminent speakers as a token of appreciation and thanks. And Pushpinder Singh ji to Mr. Gaurav Zutshi, CEO of My Mobile Payments Limited, which has a very popular brand of money on mobile, getting awards and allocates from across the globe. And then Mr. Nandkumar Palani, who is CEO and Service Wing of IDRBT. Mr. Mr. Prashant from RoboSoft. I'll request Mr. Zutshi to please present a memento to Mr. Pushpinder Singh, the Honorable Session Chair.
And we'll request for a group photo from our speakers.